जी ये भी ठीक है फर्रुख, अभी तो आप सब खत्म हो रहे हैं, लम्हा लम्हा टुकड़े टुकड़े करके खत्म होना है आपने, ठीक है। अपनी एनर्जी को इंटेक्ट करें। वालेकुम अस्सलाम सोबिया, उस्मान अस्लम, वालेकुम अस्सलाम एंड मॉर्निंग। वेल जी ओपन तो होना ही है सारा कुछ, ठीक है। यकीनन CSS जो है that allures the people as well, because once you get in and right after a couple of months जब सारे सब्जेक्ट खुल जाते हैं तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। फिर आप, वो पंजाबी में कहते हैं कि जी फिरकी अंगर घूम गया, पंबीरी अंगर घूम गया बंदा, तो बंदा घूम जाता है, समझ नहीं लगती उसके साथ हो क्या रहा है। ये नेचुरल होता है, नेचुरल होता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, बिकॉज वन थिंग इज देयर। वो इंग्लिश एक राइटर है अमेरिकन, उसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंगवे। हेमिंगवे कहते हैं मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, कि इंसान को तबाह तो किया जा सकता है लेकिन शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो शिकस्त जो होती है ना, दैट इज एन इननेट रेजिग्नेशन। वंस यू आर कमिटेड टू गो टू रिजाइन, देन यू आर रिजाइन्ड, अदरवाइज नॉट, ठीक है। इनविंसिबिलिटी को इंटेक्ट रखिए सर जी। हाँ जी डेफिनेटली जी। बखे उधेड़ते नहीं है सोबिया, बखे उधर नहीं उधरने हैं, इसमें उधरते हैं। तो लेकिन ये कि अपनी एनर्जीज को इंटेक्ट रखिए, अल्लाह ताला करम करेगा। आप बिल्कुल, आपका तो बैच ही बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपका बैच, माशाल्लाह। वर्किंग करने वाले हैं, प्लेजेंट माइंडेड, प्लेजेंट नेचर्ड भी हैं, और माशाल्लाह काम भी अपना पूरा कर रहे हैं, उसको भी स्लैग नहीं कर रहे, और रिमार्केबल इंप्रूवमेंट भी है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह जो आपकी आ रही है। इंशाल्लाह आप में से बहुत से लोगों की खुशखबरियां मिलने वाली हैं अल्लाह की मेहरबानी से। डेफिनेटली आई बिलीव इट, योर स्पिरिट। वेल जी स्टार्ट करते हैं। देखिए जी हमने स्टार्ट कैसे करना है। हमेशा नहीं, अभी नहीं मुझे मिला, शायद अभी बाद में वो मुझे दे दे, अभी दे देंगे, मैं ले लेता हूं उनसे, ठीक है जी। जी जनाब, ये इब्तदाई इश्क ही है, आगे आगे भी इंशाल्लाह इश्क ही करेंगे आप, कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। थैंक यू सोबिया नवाज बेटा। हौसला होना भी चाहिए, वो कहते हैं ना मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तुम अगर आसरा तो दे। तो आसरा बड़ी चीज होता है, हौसला बड़ी चीज होता है, ठीक है जी। अमीर रमजा, ये भी मुझे मिल जाएगी, राजिया दे देंगी मुझे, नॉट वरी, ठीक है। ये बाद में देती होती हैं, क्लास के बाद मुझे मिल जाएंगी, आई विल गेट दैम, ओके। वेल जी स्टार्ट कर रहे हैं अपने काम को। फ्रेजल वर्ब से मैं आगाज करूंगा। आपको मैंने 3 फ्रेजल वर्ब्स दिए थे, 3 इडियम्स दिए थे, और 2 कल मैंने आपको दिए थे आपके पेयर ऑफ वर्ड्स, और एक पेज आपको मैंने दिया था प्रीपोजिशंस का, ठीक है। सबसे पहले मैं फ्रेजल वर्ब से आगाज करूंगा। 1 बाय 1 पेस्ट करने आपने, एक एक करके, एक एक का सेंटेंस पहले मैं चेक करूंगा, फिर दूसरे पे आएंगे। फ्रेजल वर्ब करने हैं तो फ्रेजल वर्ब भी पहले करने हैं, इडियम ना पेस्ट कीजिएगा। फ्रेजल वर्ब्स, योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ, डू इट। फ्रेजल वर्ब्स पेस्ट कर दे, शाबाश शाबाश, हरी अप। फ्रेजल वर्ब्स, ऑडिबिलिटी ठीक है, कोई आवाज का इशू तो नहीं है जी, ठीक है। निकालिए फ्रेजल वर्ब्स। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एवरीबॉडी गॉट साइलेंट? ओके ओके, सोबिया कीजिए, फ्रेजल वर्ब्स पेस्ट कीजिए। ये परसों की एक्सरसाइज है, फ्रेजल वर्ब्स 3 थे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है हमेशा 1 बाय 1 एक एक करके जी। ब्लेयर आउट। The neighbors called the police to stop the music blaring out from the party next door. ठीक है, ठीक है, पहला दूसरा भी पढ़ लेता हूं, अब आपके तीनों पढ़ लेता हूं। The plaintiff expressed his bottled up feelings in the court when he was called to the stand. Shabash, catch on. The tulip trousers are catching on with a young lady's nowadays. बड़े यार खबर है तुम्हें अहमशा कि ये tulip trousers भी कोई चीज होती है। It means you are very conscious about the dress of the ladies. Am I right, अहमशा? Mosfa. Okay, the urbanization issue in Karachi blurs out the headlines these days. Shabash, ठीक है ना आप। So your new boss is habitual
of blaring out. इतना थोड़ा सा नाकाफी होगा सोबिया, मजीद आगे काज भी बता दे कोई, ठीक है? मजीद आगे एक फ्रेज आ जाएगी तो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा जी. The DJ put on great music that was blaring out of the speakers to the crowd's enjoyment. शाबाश, ठीक है? When meeting strangers, it is advisable to bottle up yourself. Right. Okay, Gina. He has a bad habit of blaring out at his wife for no apparent reasons. Okay. Well, the alarm clock blaring out at 5 a.m. every morning disrupts the alarm clock के बाद मुस्तफा कॉमा आएगा वरना सारा फिक्रा गलत हो जाएगा. कॉमा लगाइए. blaring out at 5 every morning disrupts my sleep beyond repair. बिल्कुल ठीक है. The newspaper headlines blared out the scandal. What scandal? अनम क्लियर कर दें इसको, कुछ भी जो है ना एम्बिगुअस ना छोड़े, मजीद आगे थोड़ा सा ऐड कर दें नायाब. The leaders are expected to bottle up their anxieties in the hardest of the time. Shabash. Ji. Next. He was annoyed but somehow managed to bottle up his feelings. The radio's blaring out. अवैस इतना ये फिक्रा अच्छा नहीं है. ये तो मैट्रिक का स्टूडेंट भी बना सकता है अवैस. ये नहीं फिक्रा अच्छा आपका मोहम्मद अवैस. The radio's blaring out. ये substandard sentence है, थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा. अकीला. Despite the fact that he was in some kind of melancholy, his television was blaring out with pop songs throughout the evening. Shabash. Good sentence. Some people bottle up their emotions and always seem happy. Seems नहीं, people है ना, हम ना s cut कीजिए, seem happy. We must not bottle up our feelings. ठीक है. Basically bottle up का मतलब ही feelings को छुपाना होता है. We must not bottle up. ठीक है. ये भी थोड़ा बहुत अच्छा फिक्रा नहीं होगा तल्ला. कोई contextual sentence देने की कोशिश करें. The headlines are blaring out the scandal of famous model. Blaring out, Usman, blare out. Right, Zanera? The senator blared out. नहीं, about नहीं आना Zanera. Senator blared out his reservations upon the new bill. About cut कर दें, catch on. I finally joined the bandwagon of the long coat on trend of wearing floral headbands. Very fine, bottle up. If you'll remain bottled up about this issue, you'll fall in depression. Shabash. The subject of feminism has caught on the attention of a wider public. Beautiful sentence, Nayab. Upar le jaye ji. Sarah Suleiman. Haji. I'm engaged. Monica blurred out from her apartment balcony when she could not contain her excitement anymore. जी सिचुएशनल सेंटेंस है, सेंटेंस ठीक है, वैसे ऐसा सिचुएशनल सेंटेंस अवॉइड करना है सारा, अच्छा है सेंटेंस. After years of trauma without any emotional support, he has now started to bottle up and lashes out on people. Bottle up भी करें, his feelings cut कर दे. अमीर हमजा. Sadaf. India can't prove her stance regarding Kashmir by just blaring out. Shabash. Be assertive rather than bottling up. Bottling up. Alia. जी, the landlord keeps blaring out warnings of early rent. बिल्कुल ठीक है. ऊपर ले जाएं जी, bottle up. रोकिएगा. Bottled up feelings destroy mental health. ठीक है जी. In present times, even wearing chocolate wrappers stapled to your jacket can catch on as fashion. ठीक है, Hafsa. I blared out when I got my intermediate result with 85%. Right, ठीक है Hafsa. When I was watching movies, someone outside of my house blurted out at poor. बिल्कुल ठीक है. मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे. वो रिक्वेस्ट ये है कि पर्सनल प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस को अवॉइड करें. I, you, we. ठीक है. आप इसको किसी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, किसी मैच्योर सोशल जार्गन में सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें. ठीक है, ताकि आपके सेंटेंस डिस्टिंक्टिव हो. इस तरह के तो सभी बनाएंगे. गॉट द आइडिया? मैच्योर होना चाहिए. ड्यूरिंग एन आर्गुमेंट द पार्टीज गॉट रियली हार्श एंड स्टार्टेड ब्लरिंग आउट ईच अदर्स वीकनेस. ईच अदर्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए अदर के ऊपर. गना apostrophe s. Next, the judge blurred out the missing evidence before refusing to verdict. बिल्कुल ठीक है. Sometimes it is imperative to bottle up. Bottle up सिर्फ your intentions cut कर दें अकेला, so that you won't be comprehended wrong. बिल्कुल ठीक है. Good sentence. ऊपर ले जाएं जी.
Sobia Nawaz. The old dramas are catching on among youngsters. She kept her feelings bottled up after the death of her daughter and eventually ended up committing suicide herself. Committing suicide herself cut kar dein sara, and she kept on bottling up kar lein. She kept on bottling up after the death. She kept on bottling up. Bottle up का मतलब भी feelings को करना होता है, conceal. The idea of socialism in underdeveloped countries to distribute wealth equally has caught on. देखिए कितना प्यारा फिक्रा है मीर हमजा का, थोड़ा political context में आया सबा. Maulana Tariq Jamil blurring out the rights of parents and my father increased the volume. Maulana Tariq Jamil was blaring out, verb nahi hai saba, was blaring out the rights of parents and my father increased the volume. Very fine sentence. Okay. Mustafa Imran, the habit of bottling up, emotions cut kar de Mustafa, often leads to mental breakdowns sooner or later. ठीक है, not bottle up your aggression, it will affect your health. ठीक है, अब देखिए ये फिक्रा भी मैं अप्रूव नहीं करूंगा अवैध शाहिद का. Imperative sentences नहीं बनाने पेपर में, don't say, do से start होने वाले. ठीक है, imperatives नहीं बनाने. Though one must not bottle up their experiences about the public places on the matter of honor of the house. ठीक है, हाँ जी, यहाँ रखिएगा जी. UAE and US are trying to bottle up their intentions, but all in vain. ठीक है जी. G. With COVID-19 not leaving anytime soon, the trend of wearing matching masks is catching on, especially among the ladies. Yes, it is a fact as well, Sarah. But I'll be appointed at the government post and then I'll catch on in my family. नहीं, grammatically गलत है दाऊद ये फिक्रा. Grammatically गलत है. Agha Fran. A bottle up is frustration with the university's dismal education system as he thought that his outburst would damages chances of success. Chances of success. At nahi, agar sab off kar le. Taking external debt is a Hobson's choice for the current government to run its affairs. Shabash. Gulamad's 50% of sale bottling up females right now. Just a minute, G. Afsa. Gulamad's 50% sale bottling up females right now. Nahi. Ambiguity है sentence में. Afsa clear नहीं है. Clear नहीं. This news channel is blurring out this rape case effectively and digging out all hidden facts. अब देखिए this news channel and this rape case. हसान ये ambiguity create कर रहा है. आप लिख सकते हैं some news channels are blaring out the current rape case effectively and digging out the hidden facts. ठीक है, this news channel या this rape case, we don't know what is this channel and what is that rape case. Okay, so ambiguity. It is astonishing that some of the old songs are being recreated in such a way that they are being caught on like never before. Good sentence. Qasim. Our nation keeps bottling up the ideas of raising concerns for our rights. Shabash. The vicious divisiveness in the nation was catching on due to the populist rhetoric of the nationalist leadership. आगा साहब एक किथों एडे मुश्किल लफ्ज काट के ले आंदे ने सारा फिक्रा बनाया. ठीक है, अच्छा फिक्रा है. शाबाश. Police caught him as he was blaming out upon the neighbors. Yeah, upon आना है फर्क. Upon the neighbors. ठीक है. Zaida. People are blaring out on the increasing scrutiny issues in country. बिल्कुल ठीक है. ऊपर ले जाएं. जाहिदा के ऊपर जी आ गया जी. कहाँ आया? हाँ जी, ठीक है ठीक है. Hassan. By nature, females are very shy. Often they bottle up themselves. शाबाश. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है हसन साहब. सारी फीमेल शाई नहीं होती हैं. ठीक है. Well, okay. When I will be appointed at the government post, and ये हो गया था आपका. What is grammar error in it? When I will be appointed at the government post and then then I will catch on. नहीं, I will be caught on. I will be catch on. I will be caught on. I will catch on. नहीं.
I will be caught on, मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, ठीक है, I will be caught on, ऐसे आना है दाऊद. Okay, next, Nawab. CPEC was a Hobson's choice for Nawaz Sharif to boost up the economy. ठीक है, शाबाश. Shares longer inland were initially shunned by the majority, but caught on after they were won by a number of celebrities. बिल्कुल ठीक है मुस्तफा इमरान जी, आपका सेंटेंस मिस हो गया, अकेला दोबारा लगा दें. It's a misconception that catching on has something to do with fashion, rather it requires your virtues. नहीं, मुबहिम में क्लैरिटी नहीं है गिना इरफान. What kind of catching on and in what sense? कौन सी popularity, किस sense में? No idea is there. अकेला, it is astonishing that some of the old songs are. ये हो गया, ये मैंने पढ़ लिया था, बड़ा खूबसूरत सेंटेंस. अकेला मैंने पढ़ लिया, ये आपका बड़ा अच्छा, मैंने कॉम्प्लीमेंट भी दिया. Well, दाऊद अहमद, okay, हो गया. Muhammad Amir Hamza, it's a Hobson's choice for Pakistan to facilitate the economic corridor with China, because if they fail to do, they will not receive any aid. Shabash, ठीक है. It is a case of Hobson's choice because if I go abroad for further studies, I lose my job. ठीक है. आलिया, लेकिन बहुत अच्छा फिक्रा नहीं है. Curtain lecture or seriousness at breakfast was giving me signs of an incoming curtain lecture. Oh my God. So Alia, you were alert enough. Okay, fly in the ointment. Coronavirus is being the fly in the ointment of global economy. Shabash, ठीक है. Hafsa. Alia, अच्छे sentences हैं आपके. Hafsa. Shabazz bottled up when government asked to bring Nawaz through Interpol. Asked. ED लगाइए. Next. G. Sabah. The fear of rejection by the society compels the rape survivors to bottle up their traumas. बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत sentence. Amisha, Hobson's choice. In conservative societies, female are given Hobson's choice regarding their marriage. ठीक है. The wife gives the husband curtain lecture regularly due to his lack of punctuality and relevance to coming back home on time. बिल्कुल ठीक है अमीर हमजा, सोच लो आपके साथ क्या होना है. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हो आप. नायाब, in the Israel's view, Saudi Arabia is in the fly in the ointment. Is a fly in the ointment in a Abraham Accord. Is a fly in the ointment. In Niana, शायद typing mistake है नायाब. जी, Alia. Ji Alia, good sentences. His attitude shows that he has currently been to a curtain lecture. ठीक है सोबिया नवाज, बिल्कुल ठीक है. वो मेसू जैसी शक्ल है ना, बनाई होती बंदे ने, उससे पता चल जाता है. जी, the scandalous husband frequently got curtain lectures because of his affairs. Yes, this is also one of the problem. ठीक है, to be caught red-handed. ये मसाइल होते हैं. Okay, बड़ा अच्छा फिक्रा है हमेशा. Talha, the hacker, encrypted Ali's computer and gave him Hobson's choice of either giving ransom to the hacker or losing all his data. Well done. Current scenario में अच्छा फिक्रा. Due to there being a meat shortage, after Eid, to his dismay, Ali had to go for the Hobson's choice of his salad for lunch. थोड़ी सी गलती है इसमें मुस्तफा इमरान. Due to सिर्फ आएगा due to shortage of meat after Eid, ऐसे आएगा. Due to shortage of meat after Eid. ठीक है, ऐसे लिखनी है पहली लाइन. Next, Kashmir issue was blaring out. Amna, was blaring out by Prime Minister Imran Khan at the meeting of UN. नहीं, was blared out आएगा यहाँ पे. E के बाद D लगा ले, यहाँ blared out आएगा. Kashmir issue was blared out by the Premier Imran Khan at the meeting of UN. बिल्कुल ठीक है, Hobson's choice. Taking up his low-paid job was a Hobson's choice for me. ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है जुनैरा. ये कोई भी FSC का स्टूडेंट भी बना सकता है. This low-paid job, what job? ठीक है, तो थोड़ा सा और मीनिंगफुल होना चाहिए. Curtain lecture. His car broke down on the way, and he received a curtain lecture for not properly maintaining it. Exactly, all right. ये अच्छा फिक्रा है. Fly in the ointment. Students were happy earlier today until examination schedule was announced, proving a fly in the ointment for them. बिल्कुल ठीक है. Good sentence.
G, the insurgencies proved to be a fly in the ointment for the government's projects. बिल्कुल ठीक है अमित शाह. I hope the idea of humanity will catch on. ठीक है सबा खान, ठीक है रोकिएगा जी. नायाब अजहर. Unlike the majority of the women, men avoid discussing the current lectures with their colleagues. नहीं वैसे करते भी हैं. नायाब अजहर फिक्र ठीक है आपका. ये बल्कि ये कोरोना से पहले ना एक दिन मैं कॉलेज गया तो मेरी आदत है मैं कॉलेज को 15-20 मिनट पहले जाता हूँ. मैं गया तो मेरे एक कुलीग ना वहां सोफे पे लेटे हुए थे. तो मैंने जाके हाथ मिलाया, उनसे हैंडशेक किया तो मुझे फील हुआ इनको बड़ा तेज बुखार है. मैंने कहा यू आर हैविंग टेम्परेचर. तो कहने लगे यार मेरा टेम्परेचर ही नहीं, मेरा गला भी बड़ा खराब है. तो मैंने कहा घर में रेस्ट करना था. कहने लगे बेवकूफ, रेस्ट करने के लिए तो यहाँ आया हूँ. तो कभी कभी ऐसे भी होता है. Anyway, the tintinabulations of the wife's curtain lectures are too precious to enraptured husband to be shared with other ears. Beautiful. ठीक है बिल्कुल ठीक sentence है. Next, Anam. हो गया अनम का. Word has options choice other than tackling the climate issue to continue life on Earth. Good sentence. सदफ अच्छा sentence है. Next, he was given a curtain lecture when his wife found out that he had been lying to her. Exactly. Good sentence. Jonah is excited about spending time with his mother, but the fly in the ointment will be the presence of his father-in-law, who he is not particularly fond of. ठीक है बिल्कुल ठीक है. Hobson's choice about food leads towards pessimistic approach. ठीक है दाऊद. मोहम्मद अमीर रमजा, तुम्हारा सेंटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन ऐसा सेंटेंस पेपर में मत लिखिए, ठीक है, पर्सनलाइज्ड प्रोनाउंस के साथ. नेक्स्ट, जाहिदा. इस किस्म के जो फिक्रे होते हैं ना इन्हें जनरल सेंस में बना लेते. Zaida Farouk. Despite all the talk about democracy in my family, my father usually gives the rest of us Hobson's choice. Right. If we were given the Hobson's choice of bailing out American banks despite protests by the public. Good sentence, Aga Farhan. The incident of 9/11 proved to be Hobson's choice for Pakistan. बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे थोड़ा सा context दे दें सबा. But to become an ally to the American cause. ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. Hassan. Misha Shafi thinks that she will be caught on, will be आ गया ना Hassan, caught on with her controversial statements about Me Too trend. ठीक है रुक जाइए, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा. हाँ यहाँ पे ठीक है. I think I'll never get curtain lecture as I never argue with ladies. दाऊद ये फिक्रा बनाया है या अपनी कोई आप बीती बता रहे हैं मुझे आप कि वाकई ऐसा है, आप इतने सीधे साधे हैं कि आप बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. ठीक है, लेकिन अगर ये सेंटेंस बनाया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पर्सनल प्रोनाउन के साथ ना बनाए, जनरल सेंस में बना ले. अच्छा है फिक्र. पर due to the COVID increasing in the fear, there is option choice for the travelers. बिल्कुल ठीक है. Curtain lectures are a sense of marriage life. Oh my God, so if you are justifying them, it means online classes are very beneficial, but a poor internet connection could be a fly in the ointment. So ये बहुत अच्छा सेंटेंस है. दिल की आवाज भी है सब स्टूडेंट्स की. वाकई बड़ा गुस्सा आता है जब एकदम नेट ब्रेक होता है. आमना, because of party in his house, कॉमा लगाइए यहाँ. He had options choice to go with this low income job. ठीक है आमना, लेकिन फिर भी इसमें this low income job ambiguity आने ना दे. ठीक है जी. Turning a blind eye to the corrupt practices in my office is options choice for me because I report it, I'll be transferred. If I report it, I'll be transferred. बिल्कुल ठीक है. Sarah tried everything from curtain lectures to emotional blackmail, but nothing worked to rid her husband of his drinking problems. Right. Sarah's deteriorating health was the only fly in the ointment in an otherwise perfect marriage. ठीक है शाबाश. बिल्कुल ठीक है सारा. सारा ये सारा कुछ अपने नाम से क्यों दे दिया आपने? ओके वेल, शराब पीने वाले शराब नहीं छोड़ते होते. एक बंदा ना बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ड्रंकर्ड था, सुबह नाश्ते की टेबल पे भी शराब पी रहा था एक दिन.
बीवी आई एक अखबार लेके उसके पास, कहने लगी ये खबर पढ़ो। उसमें लिखा हुआ था कसरत मैनोशी की वजह से, मैनोशी शराब पीने को ही कहते हैं, कसरत मैनोशी की वजह से कल 2 आदमी मर गए। कहने लगा कल से बंद। बीवी खुश हो गई कि बड़ा डिटरमिन्ड हो गया, इसने प्रॉमिस किया। अगले दिन फिर पी रहा था। बीवी कहने लगी तुमने कल तो मेरे साथ वादा किया कि कल से बंद। कहते किस कमबख्त ने ये वादा किया कि कल से शराब बंद? मेरा मतलब था कल से ऐसी मनूस अखबार बंद जिसमें ऐसी खबर आई है। कहता आज कोई अखबार आई नहीं ना आई, मैंने बंद करवा दी। तो ऐसे भी होता। द dismal of the captain and the last over proved to be a fly in the ointment for the Pakistan cricket team. ठीक है, Mr. Khan rearranged all the furniture to the house in the house before his wife's return to avoid her curtain lecture. Exactly, all right. Well, रोकिएगा जी. Oh God, all my sentences have been pasted as a paragraph here. No problem. I'll paste them again one by one. No need. Sarah, I have got the meaning out of all of them. No problem. To ensure overflowing of knowledge due to poor infrastructure was a Hobson's choice for Cratcheris. Bilkul ठीक है Sarah. Turning a blind eye to the corrupt practices in my office is Hobson's choice for me because I हो गया Sarah, ये पढ़ लिए थे मैंने. ठीक हो गया. Nurul Huda, curtain lecture. Sometimes a curtain lecture also a way of wife to show their possessiveness. Not sometimes, रोकिएगा, Nurul Huda, all the times. Sometimes the curtain lecture is, verb is missing, Nurul Huda, is also a way of wives. यहाँ wives आएगा, wives, wives नहीं आना, wives, wives, to show their possessiveness. ठीक है, प्लूरल आना है वाइफ का, अपोस्ट्रोफी नहीं आनी. सारा हो गया, ये परफेक्ट मैरिज हो गया. ठीक है. इन लाइफ एवरीवन faces option choices, but only the capable ones make the most of such choices. Shabash, good suggestion. Fly in the ointment. China is always a fly in the ointment for United States in economic status. Ji is. Nurul Huda, आपका present indefinite अभी तक missing है, अभी तक गड़बड़ है, वर्ब नहीं देते आप, पूरे सेंटेंस में वर्ब नहीं है. चाइना इज ऑलवेज अ फ्लाई. ठीक है, डाउट. सेंटेंस बहुत अच्छा है. करप्शन केसेस अगेंस्ट अली हैज फ्लॉन हिज रिप्यूट इन द ऑइंटमेंट. नहीं, करप्शन केसेस अगेंस्ट अली हैज नहीं, हैव प्रूव्ड फ्लाई इन द ऑइंटमेंट regarding his repute. ऐसे आएगा दाऊद. Corruption cases against Ali have proved fly in the ointment regarding his repute. ठीक कर लें. Nurjahan could have given curtain lecture to curb Shah Jahan's extravagances of making the Taj Mahal. नहीं यार, औरतों के लिए कुछ भी बनाया जाए औरतें बहुत खुश होती हैं, ऐसा नहीं होना था. फिक्रा बहुत अच्छा है आपका आगा साहब. Ali's parents early return from the trip to the northern areas was a fly in the ointment to house party. Yes, ठीक है मुस्तफा. All received curtain lectures of placing the towel on the bed. Ali, sorry, received curtain lecture of placing the towel on the bed. जी बिल्कुल ठीक है. अली को किसने कहा था कि कंधे पे या बेड के ऊपर जाके टेबल वो टॉवल रख? Manners matter. Hassan, starting CSS is a Hobson's choice for me because I have already resigned from my current job. Okay, good sentence. Akila, people avoid curtain lectures by not paying attention to the context that leads to bigger mass resulting in a new curtain lecture. Shabash, ठीक है, बहुत अच्छा है. Because अपना नाम अच्छा लगता है मुझे सर. Okay, Sarah, that's very fine. ठीक हो गया. Okay, सदफ, सारा अच्छा लगता है तो आप हर फिक्रे में भी ऐड कर सकते हैं, no problem at all. ठीक है. So this is what's making the relation alive. अगर बीवी शक और लेक्चर नहीं देगी तो हस्बैंड की लाइफ ही बोरिंग हो जाएगी. सदफ, बड़े कम हस्बैंड ऐसे होंगे जो इसको पॉजिटिवली लें, लेकिन जो ले लेंगे उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी. ठीक है, होता है सदफ कभी कभी ऐसे. एक दिन ना एक खातून थी शादीशुदा, उसने रात को 2:30 बजे अपने हस्बैंड को जगा दिया, बुरी तरह से शेक किया. वो बेचारा आंखें मलता हुआ उठा, कहने लगा क्या बात है? कहने लगी कि आज डेट क्या है? वो घड़ी देखी उसने, उसकी शक्ल देखी, कहने लगा 7 तारीख है. लेकिन ये कौन सा टाइम है मुझे जगा के देख पूछे? कहने लगी जिंदगी मौत का मसला है, मुझे ये बताएं
कि पाकिस्तान ने एटमी धमाका कब किया था, वो कहने लगा 28 मई 1998 को। कहने लगी साथ वाले शेख साहब की बेटी घर से कब भागी थी, कहते 4 नवंबर को। कहने लगी सामने वाले हाजी साहब ने दूसरी शादी कब की थी रिफत के साथ, कहते 3 मार्च को। कहने लगी ये हमारे बाईं तरफ जो भट्ट साहब रहते हैं उनको फूड पॉइजनिंग कब हुई जब मरते मरते बचे थे, वो कहने लगे 7 अप्रैल को। कहने लगा लेकिन ये सारे क्वेश्चन तुम इस वक्त मुझसे क्यों पूछ रही? कहती कुछ नहीं, सो जाए, बस आपको बताना था कि आज मेरी बर्थडे थी। तो जनाब बंदा कितने जा सकता है, ये चीजें नहीं भूल सकता बंदा, घर से निकल जाएगा, आएगा नहीं। Well, the COVID-19 pandemic has shifted the education sector towards virtual learning. However, the fly in the ointment is that many people in Pakistan are deprived of access to the to internet. Good sentence, Mariam, बहुत अच्छा, शाबाश. For peace deal, releasing Taliban was a Hobson's choice for Afghanistan. अब देखिए जाहिदा ने कितना अच्छा फिक्रा बनाया, छोटा सा स्मार्ट लेकिन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एवं फिक्रा मैच्योर हो जाता है, एवं बहुत अच्छे, शाबाश. नुलुलुदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटा, ठीक है, थोड़ी मजीद आपने निहार मुंह इस पे प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट, the international community have turned a blind eye to the atrocities committed by the Indian military in Kashmir. बिल्कुल ठीक है. एक सेकंड जी. The international community have turned a blind eye to the atrocities committed by the Indian army in Kashmir. इसमें हमारा वर्ब वो इडियम कौन सा था जनाब आगा फरहान अली साहब? ये आपने किस चीज का बनाया है सेंटेंस? मुझे नहीं समझ रहा ये आपने किस चीज के लिए बनाया? फिक्रा बिल्कुल ठीक है. His parents' sudden arrival was a fly in the ointment. फर्रुख आगे कॉन्टेक्स्ट दे दें फर्रुख साहब. In what sense? Regarding his party or something like that. Okay. I advised my friend to get ready for curtain lecture as he was getting married. Okay. Zaida, it is good to alarm the people before time. That is very fine. कि तैयार हो जाओ, आजादी खत्म, लेक्चर शुरू. ऊपर आ जाए जी. थोड़ा सा नीचे कीजिए और नीचे, हाँ यहां पे रखिएगा. Sometimes husbands should bear curtain lecture to maintain a healthy balance in the home. Okay, okay. Hasan Saab, solicited. ठीक है जी. He wants to discuss a serious issue with his mom, but his wife proves fly in the ointment. Proofs. Okay, चलें आ जाएगा ऐसे भी. Mom को एन माँ अगे बड़ी बड़ी होंगी, हम ना आपने बहुत बड़ा कर दिया उसको कैपिटल्स में देके MOM. Well, he is on time to avoid curtain lecture from his wife. Okay. John wanted to impress Lily by paying in the restaurant, but there was fly in the ointment as she turned out to be a feminist. Okay. Oh, acha sentence. Most of the times, wives go for in their curtain lectures and make their husbands annoyed. ठीक है जी. मजबूरी है जी. Wives justified भी होती हैं कि ना, प्रॉब्लम होता है. एक साहब अपनी बीवी के साथ ना एक होटल में डिनर कर रहे थे, उसकी बर्थडे पे उसको खाना खिलाने लेके आया. बेबी बड़ी खुश थी कि मेरे हस्बैंड ने टाइम निकाला मेरे लिए डिनर के लिए. खाना खा रहे तो अचानक एक लड़की आई, उसने हस्बैंड के कंधे पे हाथ रखा, कहने लगी हनी वेयर हैड यू बीन सिंस लॉन्ग? मैं वो सामने वाली टेबल पे बैठी हूँ. व्हेन यू फिनिश योर लंच योर डिनर कम टू मी प्लीज, आई इंटेंड टू टॉक टू यू. बीवी के फ्यूज उड़ गए जनाब, सारे अरमानों का फलूदा हो गया. हाथ से रख दिया फोर्क, ना खाना अंदर जाए ना बाहर आए. रोते हुए कहने लगी कौन थी ये कलमुही? वो कहने लगा चुप करो, अभी उसे भी जाके बताना है तू कौन है. तो कर्टन लेक्चर तो फिर आने ही आने हैं ना. ठीक है. नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाइफ्स गो फॉर इन द कर्टन लेक्चर्स एंड मेक देयर हस्बैंड्स annoyed. ठीक है. The supper that she made could have tasted better, but the fly in the ointment was the empty pepper jar. Okay, Akela. Well, he's on time to avoid curtain lecture from his wife as they decided to go for shopping. Shabash, ठीक है. अब context आ गया. Reopening of education institutions is a fly in the ointment for students, right? Turn a blind eye. Turn a blind eye मैंने दिया ही नहीं आगा साहब, नहीं दिया मैंने. Okay, well, according to the Constitution of Pakistan, an atheist cannot be the head of the state. Shabash, ठीक है सोबिया. जी सदफ, really ऐसे ही है. Shariar Imran. It's a fly in the ointment when an average student copies the work of a smart student, right? ठीक है. मतलब साड़ पैंदा ना उदों, मतलब अंदर से बंदा जलता है. Okay, now to live
A happy and thankful life. Man should learn to ignore the flies in the ointment when presented with blessing. Shabash, good sentence. Very unique. नीचे करें जी थोड़ा सा नीचे करें आयशा. हाँ जी. जी. Atheists are vulnerable to get distracted due to the absence of clear-cut code of conduct. Shabash. The mathematician Pascal conducted a coin experiment to justify his atheistic way of life. The agnostic minds tend to compare different scriptures. Shabash. Sare theek hai. Akela. It would not be appropriate to judge one's nobility mainly because he is an atheist. Good. People should rather focus on their personal well-being than being agnostic so that they can be a better version of themselves. Shabash. Again, very fine. Napitule sentence Akilanam compliments atheist. Andrew, being an atheist, doesn't go to the church or religious ceremonies because the concept of a higher power does not coincide with his beliefs. Good sentence. Amir Hamza. ऊपर ले जाएं जी आयशा. आयशा ऊपर ले जाएं. जी जी यहाँ पे. Agnostic. An agnostic person who chooses to remain content about not knowing anything about God should refer to the holy books to get some understanding of God's power and existence. Good sentence. Both खूबसूरत sentence Amir Hamza. So being a Muslim, I believe that Allah is everywhere. Thus, I never had an agnostic experience. Beautiful, Sobia. Briefing. He was running short of time, so he started briefing his experiences at the airport. Right, debriefing. He often tries to skip from the debriefing session so that he won't be able to get caught sleeping in the conference. Right, okay. Agasab, the defeat dealt by Babur was a fly in the ointment for Abraham Lodi, who even when he had a superior army. Bilkul theek hai. Atheist. G. The atheist refused to say a prayer before eating supper. ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा फिक्रा नहीं होगा आलिया, इसे चेंज करें. बड़ा एवरेज लेवल सेंटेंस है. Majority of agnostic people are also more doubtful. Okay. Many foreign exchange students are increasingly turning to atheism once they move abroad. G. Beautiful. Atheists feel no shame in mocking other people's religions. Shabash. The life-saving miracle made the agnostic man realize the existence of divine powers. Shabash. Ahmad Shah, dono achhe sentences. Farhan's mother prayed night and day for her atheist son to turn back to God. Shabash. ठीक है सारा. सारा इसमें सारा क्यों नहीं आया? Sarah's mother लगाए. ठीक है? While reading the Elementi's articles, he felt atheist. ठीक है जी. ठीक है. शाबाश. शुरू के चंद एक सेंटेंसेस हल्के आए हैं. इल्यूमिनेट्स में समझ गया हूं. नो प्रॉब्लम. ये मिस्टेक है आपकी उसकी. शुरू के सेंटेंसेस थोड़े से हल्के आए थे, लेकिन उसके बाद शायद आप लोगों ने मॉडिफाई किए हैं. बाद में आने वाले सेंटेंसेस बहुत अच्छे सेंटेंसेस आए हैं जी. हैरी रुकिएगा जी यहाँ पे. सोबिया नवाज. Harry asked him to make briefing of the crunch meeting in an hour. Shabash. Sorry, sir. Writing error. No problem, sir. I understand. Briefing. We have a fairly lengthy briefing tomorrow. Okay. ये ठीक है. उससे बेहतर है, लेकिन ये भी बहुत outstanding नहीं है. A debriefing would be carried out to determine what went wrong. Shabash. ठीक है. Atheist. E के साथ नहीं होता, A के साथ. Considered presence of God is like a delusion of man. बिल्कुल ठीक है. Shabash. The chief of army staff gave a briefing of military operation in the FATF region. The journalist, Fatah region, sorry. The journalist screwed up Donald Trump in the debriefing session. Later on, that journalist was not allowed to attend any of the meetings. Theek hai Nayab. The great atheist Christopher Hitchens could not help but to accept some religious wisdom as practical and useful. Shabash. The police commissioner gave media a briefing of the recent investigations. Theek hai. News reporters were not allowed to the meeting's debriefing session. Shabash. Sarah was afraid that her sister's agnosticism may lead to her becoming an atheist. Agnosticism. ठीक है? Shabash. The police officer provided a briefing to the Deputy Inspector General on the recent law and order situation in the region. Shabash. Post-conference debriefing removed many doubts about who was going to be selected by the club manager for the next meeting. Post conference लिखना जरूरी नहीं है debriefing में.
अमीर हमजा, debriefing removed. Debriefing से start करें जी. The media was debriefed after the current parliament session about COVID-19. बिल्कुल ठीक है. The Prime Minister asked his Foreign Secretary for a briefing on the latest US investment offered before the meeting began. Shabash. The whole staff could be agnostic, but the act of worship must go on. Shabash. ठीक है. Upon the briefing of the police, had a new debate opens up. ठीक है, लेकिन ambiguous है. फर्क से कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसके अंदर मौजूद. किस हवाले से? ठीक है ना, वो तो आपको पता है ना कि ये रेप केस के हवाले से मामला है, लेकिन मेंशन करना, क्लैरिटी देना बहुत जरूरी होता है. गॉट द आइडिया? वेल, अपॉन द ब्रीफिंग ऑफ द पुलिस हेड, हो गया. वेल, Ali was planning a bachelor party in Tomorrowland, but corona proved as a fly in the ointment. ठीक है. If an agnostic would pay attention to his surroundings and contemplates on the creation of skies and earth, chances are they would see the signs of God. यहां अब सारा चेंज करना पड़ेगा. आप ऐसा करें, agnostic के साथ ऐसा लगा लें, and कट कर दें. If agnostics would pay attention, है ना, समझ लग गई ना. आपने शुरू में सिंगुलर नाउन यूज किया और उसके बाद सारे प्रोनाउन आपने प्लूरल दिए हैं. डिसएग्रीमेंट आया है. ओके, नेक्स्ट. After spending the entire night finalizing the report, Sarah dozed off during the briefing of the meeting. Oh, Sarah got too tired. Okay. The Prime Minister was briefing on the different social issues of society. To change his aspects of religion is a very difficult task as he is a pure aesthetic. Okay. Some contemporary philosophers believe that agnosticism would not be able to succeed. Be लगाइए Agafran. Be able to succeed in countering Islam's glorious teachings. Upon the briefing of the incident on motorway by the police head, a new debate opens up. Shabash. ठीक है. The consultant asked House officer to debrief the recent road traffic accidents. Shabash. The pilot was debriefed after the flight. बिल्कुल ठीक है. शाबाश. अच्छे सेंटेंसेस आए हैं. बात के तो बहुत ही अच्छे आए हैं. कुछ बड़े यूनिक ब्रेन्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सेंटेंसेस दिए हैं. जैसे वैस ने ये वाला भी दिया, द पायलट वाज डीब्रीफ्ड आफ्टर द फ्लाइट. ये भी फिक्रा ठीक है, मैं ठीक कहा है. बहुत अच्छा सेंटेंस नहीं है. सेंटेंस बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और कॉन्टेक्चुअल बनाया कीजिए. विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई सेंटेंस न दे. All participants of psychological experiments are debriefed at the end. ठीक है. Donald Trump's debriefing regarding the first COVID-19 conference consisted of some controversial statements. जी बिल्कुल ठीक है. मुस्तफा इमरान साहब, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा दुलत्तियां ही झाड़ते हैं और उन्होंने कभी क्या किया है? कुछ सेंसिबल बात तो उन्होंने की नहीं कभी. Well, okay. Much pleased. You made good sentences. To refer to her, to he or she, you use they, and similarly there as agnostic can be a female or a male. No, it is not a matter of gender, it is a matter of singular and plural. के ना आपने an agnostic लिख के आगे they और वगैरह वगैरह लिख दिया. ठीक है. verb भी plural यूज कर लिए. आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा गिना इरफान, तो आपका verb भी सिंगुलर होगा, प्रोनाउंस भी सिंगुलर होंगे. आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होंगे और प्रोनाउंस भी प्लूरल होंगे. इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जेंडर. एग्नोस्टिक ही या शी हो सकता है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा, वो इशू ही नहीं है हमारा. हमारा इशू है डिसएग्रीमेंट ऑफ द एंटीसीडेंट एंड द प्रोनाउन यूज्ड. गॉट द आइडिया? गौर से पढ़ना है फिर आपने उसको. जी, ऑल ड्यू टू योर कांस्टेंट सुपरविजन एंड सपोर्ट. God bless you, Jazakallah, Amir Hamza. It is unfortunate that comprehensive briefings by technocrats are often ignored by politicians. बिल्कुल ठीक है. ये देखिए ये ना आगा फरहान जैसे दे रहा है ना, comprehensive briefings by technocrats. अब उसने technocrats दिया है, technocrat नहीं दिया. Technocrats plural आ गया, आगे उसने plural verb दिया है. ठीक हो गया? In that way. MM Alam was debriefed after he downed 9 Indian fighter jets within 30 seconds. बिल्कुल ठीक है. सबक कुछ ज्यादा नहीं बता गए आप. 9 नहीं थे, I think they were 6. Okay, beautiful sentences. My compliments. Shabash.
I'm pleased. आप इंशाल्लाह एग्जाम में मार नहीं खाने वाले. I know an atheist who often says, "Oh my God, what an irony." Yes, 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 son. बल्कि ये बड़ा मशहूर एक ओरिएंटलिस्ट था. उसका एक मनाजरा हुआ था एक मर्तबा एक मुसलमान के साथ, but atheist was determined not to be convinced even by the convincing arguments. तो जब मुसलमान ने सारी दलीलें दे दी, वो कहने लगा कि well, still I am not convinced that God does exist. मुसलमान को गुस्सा चढ़ा, उसने उसके सर पे डंडा दे मारा, पास ही पड़ा था. कहने लगा, oh my God, कहने लगा, this is the God you're calling for help. तो ऐसे होता है हसन. फिक्रा बहुत अच्छा है. शाबाश. आएंगे जी. आपको एक पेज दिया गया था. They were different sets. ठीक है, गाइड कीजिए. Unfortunately, agnostics are often subject to religious schooling by believers of other religions. जी ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है सेंटेंस. जी मुझे बताइए कौन से सेट से लेके कौन से सेट तक था हमारा काम. प्लीज hurry up. Hurry up. When he became agnostic, he stopped going to mosque. बिल्कुल ठीक है. 53 to 56. ईमानदारी से बताइए किए हैं ना आपने? किए हैं या नहीं किए हैं? अपने हाथ में आप लेड पेंसिल्स पकड़ लें. अब मैं बोल रहा हूं, साथ साथ टिक करते जाएं. जो गलत है उनको करेक्ट करते जाएं. एंड पे आपने मुझे फीडबैक देना है. फीडबैक के बाद आपने इसके हवाले से मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं. ठीक है, गेट रेडी. हैव बॉल पॉइंट्स और लेड पेंसिल्स इन योर हैंड. सेट नंबर 53. We should abide by the law. By the law. She congratulated me on my success. He aimed at the bird and fired. At the bird and fired. Eggs are sold by dozens. By dozens. Can't you give up smoking? Up smoking. Next. He was charged with theft. ये misspelled है, charged है ये word, D लगाइए इसके आगे. He was charged with theft. He longs for a car. Next, we should not boast of our wealth. Next, it is not good to depend on others. Next, they were laughing at the clown. At the clown. Set number 54. Police opened the fire. G. On the demonstrators. On the demonstrators. Americans इसके लिए at use करते हैं. It is impossible to come back within a week. Within a week. He is lame of one leg. Lame of one leg. Next. Keep to the left. To the left. Next. He availed himself of the opportunity. Of the opportunity. Next. We congratulate you on passing the examination. Next. A pen is to write with. With. Next. We are tired. ये tried लिखा हुआ, it is tired. We are tired of this long movie. Of this long movie. Next. He has repeated your story word by word. Word by word. Next. The king was well informed about different subjects. अब about ना हो तो फिर चूंकि इसमें nearest option हमारी of है तो of आएगी. The king was well informed of different subjects. Set number 55. जी अकेला मैं बाद में आपका क्वेश्चन सुनता हूं. Number 55. He is not entitled to vote. To vote. He has been acquitted of the charges. Acquitted of the charges. Beggars live on charity. On charity. Next. Smoking is injurious to health. To health. Next. The car dashed against the huge trees. Okay. Next. The car dashed against the huge tree. Next, he is fit for this post. He is fit for this post. Next, look at the blackboard. Look at the blackboard. Next, he is sorry for what he did. For what he did. The boy threw a stone on the dog. Or at the dog. दोनों में से बताइए जी कौन सी सही है. देखते हैं आपका नॉलेज क्या कहता है. The boy threw a stone on the dog or at the dog. Shabash, shabash. It is at. Next, he begged for mercy. He begged for mercy. Next, he is tired of this routine. Of this routine. I do not agree to your proposal.
to your proposal. We agree with the people, but we agree to the proposals, to the ideas. The fox jumped into the river, into the river. We must prefer death to dishonor, to dishonor. Take care of your health, of your health. Charity begins at home, at home. I availed myself of the chance, of the chance. The child was dressed in red, in red. You're getting late for college, for college. I'm popular in my brothers. I'm popular in my brothers. Got the idea? These were the correct sentences. No, first of all, do give me the feedback. और उसके बाद मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है? ये टोटल 40 sentences थे. 2 wrong. Well done, Usman Aslam. Good score. Other people. फिर मैं बाद में आपके questions लेता हूं. 2 wrongs. 36 are correct. Well done. 4 wrongs. ठीक है? 35, 34. 3 wrongs. ठीक है? 7 wrongs. 38 correct. 38 out of 40. Well done. Okay. 32. Good. 5 wrongs. ठीक है? So please repeat. मैं करता हूं जी. यार पूरा सेट तो ना कहें रिपीट करने को आगा साहब. 34, 33 out of 40. 2 wrongs, 2 wrongs. Good scores. Good scores. 40. Well done, Memuna Anwar. Well done. 33. 6 wrong, sir. मिस हो गया था सर जी. मिस क्यों हो गया? मैं कर देता हूं जी. 53 and 54. मेरे पेपरों का भी कुछ ख्याल करें. So it miss हो गया था. Right. 40. Well done, Ikra Zainab. 33 out of 40. So set 55 में 2 का ऑफ है या ऑफ? मैं बताता हूं जी. आलिया नवीद. 35, 30 out of 40 सेंटेंस लिख रहा था सर. Oh my God. Well जी, पहले मैं आलिया का जवाब दे दूं. सेट नंबर 55 में 2. 55 2. He has been acquitted of the charges. जी, acquitted of. OFF आएगा यहाँ पे. ठीक है? Next. जी, अकेला मैं सुनता हूं. एक मिनट. Much better than yesterday due to options. Yes, Mustafa. I told you कि आज आपका स्कोर बेहतर होगा. Set 54 में 10. 54 में 10. The king was well informed of different subjects. Of different subjects. Got the idea? ठीक हो गया जी? Next. जी, अब मैं 53 and 4 कहा. आगा साहब आपने कौन से कहे? जरा दोबारा लिख दीजिए. आगा साहब दोबारा लिख दें. ऊपर चला गया है. 53 and 4. 54 9 में क्या आएगा जी? क्या कह रहे हैं? 54 9. He has repeated your story word by word. नहीं, word to word नहीं होता. गलत उलाम है. word to word गलत उलाम है. अभी रमजा जी. आगा साहब फिर आप मंजर से गायब हो गए हैं. 54 में 7 में ओवर क्यों नहीं आ सकता सर? आमना 54 7. A pen is to write with, my dear. 54 7 with. ठीक है? ओवर कैसे आएगा? पेन इज टू राइट ओवर कैसे आ सकता है? पेन इज टू राइट विद. लिखने के लिए होता है पेन. ओके? 53 4 and 6. आगा साहब ये तो सारा कुछ ही आप दोबारा करने को कह रहे हैं. अकेला. समटाइम्स वी यूज एट विद एम. जी, एम एट का मतलब होता है निशाना लेना. अकेला. अदर टाइम्स वी यूज विद. व्हाई इज दैट सो? एम विद. एम फॉर होता है. aim for. Sometimes we use at with aim. जी, aim at का मतलब होता है निशाना लेना. aim with नहीं होता, aim for होता है. ठीक है? We aim for excellence. हम perfection को टारगेट करते हैं. ठीक है? 53 8. मैं बोल रहा हूं जी 53 8. 53 8 is we should not boast of our wealth. Boast of. OF. Next. जी ठहरिएगा जी. एम एट एंड एम फॉर में क्या डिफरेंस है? एम एट का मतलब होता है अकेला निशाना लेना, टारगेट करना बंदूक वगैरह से. एम फॉर का मतलब होता है टू स्ट्राइव फॉर, किसी चीज के लिए कोशिश करना. 53 एंड 54. ओ माय गॉड, आप भी पूरा सेट कह रहे हैं. ओके, रोक दीजिएगा जी यहां पे जरा. नहीं, ड्रेस्ड इन रेड. फर्रुख ड्रेस्ड इन होता है. आई हैड checked on the internet, but sir, you said in. What is the reason? Dressed in, not dressed with.
ड्रेस्ड विद नहीं, ड्रेस्ड विद होता है जब किसी कंट्रास्ट को शो करना होता है। आपने गलत नहीं पढ़ा, यहां हमारे फिक्रे की सेंस है ड्रेस्ड इन। ओके, वेल सर व्हाई वॉन्ट बी 5610 बी पॉपुलर विद हिज ब्रदर्स? जी मैं बता देता हूं अमीर हमजा, पॉपुलर विद होता है कि आप आपस में भाइयों में कौन ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब लोगों के पर्सपेक्टिव में हो ना, कि लोगों में आप, फॉर एग्जांपल आप 4 भाई हैं, लोगों में आप में से कौन पॉपुलर है, तो फिर इन होता है, आई एम पॉपुलर इन माय ब्रदर्स। ठीक है, फिक्र की सेंस ये है कि अपने भाइयों में मैं ज्यादा पॉपुलर हूं, यानी लोगों के पर्सपेक्टिव में, इसलिए यहां पे इन आएगा। अगर सिर्फ भाइयों के मामले में होगा तो विद आएगा। ये गौर कीजिए जी, 53 एंड 4 दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप मेरा काम बढ़ा देते हैं, हमारा आगे कंटेंट होता है करने वाला। ठीक है, नहीं इनके रूल्स नहीं होते हम ना, फ्रेजल वर्ब्स हैं। सुनिए जी 53, नंबर 1, we should abide by the law. Number 2, she congratulated me on my success. Number 3, he aimed at the bird and fired. Number 4, eggs are sold by dozen. Number 5, can't you give up smoking? Number 6, he was charged with theft. Number 7, he longs for a car. Number 8, we should not boast of our wealth. Number 9, it is not good to depend on others. Number 10, they were laughing at the clown. Now set number 54. Police opened the fire, G, on the demonstrators. At भी होता है, ठीक है, Americans at use करते हैं. It is impossible to come back within a week. Number 3, he is lame of one leg. Number 4, keep to the left. Number 5, he availed himself of the opportunity. Number 6, we congratulate you on passing the examination. Number 7, a pen is to write with. Number 8, we are tired of this long movie. Number 9, he has repeated your story word by word. Next, the king was well informed of different subjects. ठीक है, at the demonstrators is also right. राइट करना चाहिए क्योंकि इन वोग है, चलता है, वो के अमेरिकन है। ठीक हो गया। वेल कैन वी राइट पॉपुलर अमंगेस्ट माय ब्रदर्स? नो, अमंगेस्ट की ऑप्शंस होती तो आप लिख सकते थे, अमंग माय ब्रदर होता, ऑप्शन ही नहीं है तो हमने क्यों लिखना है। ठीक है, एट द डेमोन्स्ट्रेटर्स इज ऑल्सो राइट। हाँ जी, इट इज राइट टू। नो, अब समझ लग गई आपको। इनके बेसिकली रूल्स नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, द वे द पीपल आर गोइंग टू डिस्कस देम, वी आर श्योर टू डिस्कस देम इन दैट वे। दुनिया में लैंग्वेजेस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है, ये तो फिर भी ग्रे एरिया है, और बड़े ग्रे एरियाज हैं। उसके अलावा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बड़ी चीजों पे अप्लाई होता है। आप हैरान होंगे, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन अपने मुल्कों को के लिए ही का वर्ड यूज करते हैं। They call them motherland, fatherlands. America, for the Americans is the fatherland. लेकिन हम एशियंस के लिए हमारे मुल्क जो होते हैं, हम उनके लिए she यूज करते हैं। It is motherland for us. Pakistan is a motherland. India is a motherland for the Indians. क्योंकि we associate the concept of fertility with them. ठीक है, fertile होती ना लैंड, अन्न पानी देती, इसलिए फेमिनिस्टिक ली जाती है। बड़े प्रॉब्लम्स है दुनिया में, ये जेंडर हर चीज में घुस जाता है। आलू मेल क्रॉप है, भिंडी फीमेल क्रॉप है, ठीक है। उर्दू देखें तो उर्दू में बड़े प्रॉब्लम है, उसने दही खाया या उसने दही खाई। तो लैंग्वेजेस बड़ी वसी होती हैं, इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें उन पे रिलाय करना पड़ता है जो अहले जुबान है, ठीक है जी। इट इज ऑल्सो राइट, इट इज ऑल्सो राइट फरूख सेब, आई हैव टोल्ड यू। हमने रट्टा लगाना पड़ेगा निहार मुंह या रात सोने से पहले। आ रहा हूं जी, अब अपने एक इंपॉर्टेंट कंटेंट को शुरू कर रहा हूं, ठीक है, एंड दैट इज करेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस 10 मार्क्स की ये आपका कंटेंट है। वेल डन आगा फरहान साहब।
10 मार्क्स का ये आपका कंटेंट है, ये भी एक सदाबहार कंटेंट है। इट इज फ्री ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। 4 मेजर एरियाज हैं जिनमें से आपको करेक्शंस आती हैं, वो क्या है? टेंसेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, एंड पंक्चुएशन है। ठीक है, ये 4 मेजर एरियाज है, जिसमें से बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंजिंग एरिया आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो यू मस्ट गो थ्रू पार्ट्स ऑफ स्पीच एज वेल, not to cram them up, simply to remember them, simply for the sake of identifying them। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई क्रैमिंग नहीं करनी उनकी डेफिनेशंस की। कभी कभी हम पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से अपनी बहुत सारी करेक्शंस कर लेते हैं। टेंसेस अगर हमें आते हैं तो हमारा कोई सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। इसी तरह पंक्चुएशन है, इसी तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इसके 3-4 मेजर रूल्स हैं, नॉट रूल्स, सॉरी, इंस्ट्रक्शंस एफपीएससी की तरफ से। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज you will go for the minimum and needful correction. You will either go for the minimum or needful correction. एक तो ये कि आपने सेंटेंस को कम से कम छेड़ना है, मिनिमम करेक्शन करनी है, मैक्सिमम नहीं हो सकती एक सेंटेंस में। ठीक है, मैक्सिमम करेक्शन सिर्फ उसमें होगी जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू आएगा। आपको मैं गाइड करता हूं अभी। तो नीडफुल करेक्शन जहां जरूरत होगी वहां करना है। इसका मतलब है कि करेक्शन इन्वॉल्व्स 2 मेन स्टेप्स। वन इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू आइडेंटिफाई योर एरिया ऑफ इनकरेक्शन। आपको अपना एरिया ऑफ इनकरेक्शन जो है इसको आइडेंटिफाई करना है। Once you spotlight your area of incorrection, then the second step is to correct that, and only the needful correction. ठीक हो गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन आपके लिए ये है कि no two sentences may have an identical mistake. कमीशन की इंस्ट्रक्शन है कि कोई से 2 सेंटेंसेस में आइडेंटिकल मिस्टेक नहीं हो सकती, यानी हर सेंटेंस में मिस्टेक डिफरेंट होगी, एक जैसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कमीशन झूठ बोलता है। तीसरी उनकी इंस्ट्रक्शन है कि ऑलमोस्ट 3 सेंटेंसेस विल बी गिवन ऑन द इनकरेक्शन ऑफ पंक्चुएशन, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, एक आध सेंटेंस आता है। अच्छा, ये एक्सरसाइज कभी कभी चॉइस बेस्ड होती है, आपको इसमें चॉइस दे दिया जाता है, अक्सर और बेशतर नहीं दिया जाता। सारे के सारे भी हमें करेक्ट करने पड़ते हैं। 10 सेंटेंसेस हैं, 10 के 10 करने पड़ जाते हैं। अब रेयरली एक और चांस भी होता है, कभी कभी वो बीच में एक आध करेक्ट फिक्रा भी दे देते हैं, ऑलरेडी करेक्ट होता है, और इल्ला माशाल्लाह हम उसको इनकरेक्ट करके आ जाते हैं, हम अपने ही एक फ्लो में होते हैं। तो ख्याल करना है, यू नीड टू बी विजिलेंट इनफ कि हाउ टू करेक्ट देम। करेक्शंस बेसिकली एज आई टोल्ड यू डू हैव 286 रूल्स, 286 रूल्स होते हैं करेक्शंस के। मैं सारे आपको पढ़ाने शुरू कर दूं, मैं फौत हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा आदमी हूं, ठीक है, आपका कोर्स रह जाएगा। इसलिए बीइंग टीचर्स हम इसको एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारी रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 71 के करीब ऐसे रूल्स हैं जिनमें से आपको मैक्सिमम इनकरेक्शंस आती हैं। ठीक है, सो हम इन 71 रूल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी रूल्स बहुत माइनर है। Whether you know about them or not intuitively, because of your common sense and sometimes because of your cognitive abilities, I mean the cause and effect relationship, आप उन्हें correct कर लेते हैं। तो हम इन रूल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। Got the idea? इसका एक फोल्डर है, क्या आपको कोई फोल्डर मिला है करेक्शंस का? Have you got any folder regarding corrections? No, not at all. Okay. अच्छा ही हुआ आपको अभी नहीं मिला, आपको ये फोल्डर कल मिलेगा। मैं इसी फोल्डर में से आपको करेक्शंस करवाने लगा हूं, ये आपके हाथ में आ जाएगा कल। बेहतर है थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें, आप मेरे साथ चलिए और करेक्ट कीजिए सेंटेंसेस को। ठीक हो गया? कल आपको ये मिल जाएगा जिसमें सॉल्यूशंस भी मौजूद होंगे, ठीक है, रूल्स भी मौजूद होंगे, एंड यू विल लव टू गो थ्रू देम। That is supposed to be in addition to those books I have recommended to you. जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड की हुई है,
ये इन एडिशन टू दैट होंगे ये रूल्स। गॉट द आइडिया? ठीक है, स्टार्ट करने लगा हूं। कल आपको मिल जाएगा, कल मिल जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोल्डर भी मिलेगा, कंपोज करवा लिया मैंने, वो भी आपको मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कल 2 फोल्डर आपको मिलेंगे, बल्कि 3, एक पंक्चुएशन का फोल्डर भी कल आपको मिलेगा। गॉट द आइडिया? 3 फोल्डर कल आपको मिलेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं, बी विजिलेंट। अब देखिए आपको खुद बड़ा मजा आएगा कि वेदर यू नो अबाउट द रूल्स और नॉट, आप बहुत सारे सेंटेंसेस खुद करेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, these kettles belong to my father. These kettles belong to my father. करें जी। कल इंग्लिश के की बहार होगी सर, लगता है जी, पक्की पक्की बहार होगी जी, बाहर आ जाएगी। This kettle belongs to my father. The kettle belongs to my father. Any other version? The kettle. These battles नहीं, kettle. अमीर हमजा kettle. बिल्कुल, अमीर हमजा ने ठीक की नहीं, आपने भी ठीक नहीं किया। This kettle, no, no, this kettle, no, not at all, not at all. अभी तक किसी ने ठीक नहीं किया, ये भी गलत आया वैसे शायद का। देखिए एस कट जाएगा, बाकी फिक्रा वही रहेगा। These kettle belong to my father. These kettle, आरबिनियाना नूरुल हुदा, these kettle belong to my father. ठीक हो गया? मैं अभी आपको रीजन बताता हूं इसकी, एक और फिक्रा करते हैं पहले। Vermin's spread disease. Vermin's spread disease. Is it a correct sentence? Yes, Zaida Farouk, it is a collective noun. Pogme, sir, why not plural? जी मैं अभी गाइड करता हूं आपको, ये प्लूरल ही है, ये प्लूरल ही है, अटक ये प्लूरल है। Vermin spread disease. Vermin spreads. Vermin spread diseases. Spreads vermin spread disease. नहीं, इसमें पहली ऑप्शन जो आगा साहब ने दी है वो करेक्ट है, इसमें भी एस कट जाना है। Vermin spread disease. Vermin भी प्लूरल होता है। एक और सेंटेंस, this poultry belongs to me. This poultry belongs to me. Do it. Not as anybody else. Get engaged and involved into these sentences, please. Correct. It is already correct. This poultry belongs to me. नहीं यार, this होगा तो belong तो नहीं आ सकता, कटक। Already correct. Yes, Zaida Farouk, this time you're right. देखिए ये आना है, these poultry belong to me. These poultry. अब रूल क्या है? अब आपने गौर करना है, गौर करना है। रूल ये है कि ये कैटल, वर्मेन एंड पोल्ट्री, what does it mean? It means that there are certain nouns which are written as singular. ये मैं सर्कल कर रहा हूं। कैटन, कैटल लिखा सिंगुलर के तौर पे जाता है, वर्मेन लिखा सिंगुलर के तौर पे जाता है, पोल्ट्री लिखा सिंगुलर के तौर पे जाता है, but they give us the sense of plural, right? ये लिखे सिंगुलर में जाते हैं, लेकिन ये होते सेंस हमें प्लूरल की देते हैं। चूंकि ये प्लूरल है, इसलिए फिर इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना है, प्लूरल वर्ब यूज करना है। कैटल है तो बिलोंग ठीक आया, वर्मिन है तो स्प्रेड ठीक आया, पोल्ट्री प्लूरल था, ये एस कट गया, हमने बिलोंग किया। ठीक है, क्या मतलब है? दोबारा बता रहा हूं। देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच आर रिटन एज सिंगुलर लाइक कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री, बट दे गिव अस द सेंस ऑफ प्लूरल, hence they follow a plural verb in agreement. Clear? एक फिक्रा चेक करें,
His whereabouts are not known to me. His whereabouts are not known to me. Is not known to me. जी सिंगुलर प्लूरल इसी फोल्डर में आपको मिल जाएंगी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अकेला नम is not known to me. नहीं, that poultry is not correct. It is already correct. No, no, no. His whereabouts is not known to me. Are नहीं आना, is आना. For example, इस फिक्रे को देखिए. The news dash correct. क्या लिखूं मैं? Is लिखूं या are लिखूं? The news is correct. Exactly all right. अब देखिए, गौर करना. ऊपर मैंने आपको बताया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि कैटल, वर्मिन, पोल्ट्री. ये लिखे सिंगुलर में जाते हैं लेकिन ये सेंस हमें प्लूरल की देते हैं. अब कॉन्ट्रेरी टू देम कुछ नाउन हमारे ऐसे होते हैं जो लिखे प्लूरल में जाते हैं लेकिन सेंस सिंगुलर की देते हैं. ये लिखे हमने प्लूरल में एस लगा के लिखे हैं, वेयर अबाउट्स, न्यूज. ठीक है, इसलिए लिखे प्लूरल में जाते हैं लेकिन सेंस सिंगुलर की देते हैं, इसलिए दे फॉलो अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है, इट इज नॉट करेक्ट ज़नैरा. आई एम टेलिंग यू, इज आना है यहां पे. ठीक हो गया. कुछ नाउन्स लिखे सिंगुलर में जाते हैं, सेंस प्लूरल की देते हैं. कुछ लिखे प्लूरल में जाते हैं, सेंस सिंगुलर की देते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए. अब एक तीसरी कैटेगरी होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं द हंटर killed only 2 deers. करेक्ट करें. deer, exactly all right. एस कट जाएगा. मैं मसलन कहता हूं this pond abounds in fishes. This pond abounds in fishes. Again it is fish. ठीक है. तीसरी कैटेगरी है कि कुछ नाउन न्यूट्रल होते हैं. दे कैन बी यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल. डियर सिंगुलर के तौर पे भी यूज हो सकता है एज पर द सेंस ऑफ द सेंटेंस. ये प्लूरल के तौर पे भी यूज हो सकता है. ऐसे ही फिश. लेकिन फिश वाले में एक छोटा सा प्रॉब्लम है. वो ये है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश, तब आप फिर फिशेस लिख सकते हैं. If you're talking about different kinds of species of fish, फिर es आएगा, fishes. Otherwise है neutral. अब रूल क्या है? कुछ नाउन लिखे सिंगुलर जाते हैं, सेंस प्लूरल की देते हैं. कुछ लिखे प्लूरल में जाते हैं, सेंस सिंगुलर की देते हैं. और कुछ आपके न्यूट्रल होते हैं. They can be used both as singular as well as plural. Got the idea? आगे चलते हैं. आयशा, कोई लड़का बैठा है, साफ करना बोर्ड. देखिए उसे. मोहम्मद अमीर हमजा एज फिश. ये मैंने ईएस काटा है इस फिक्रे में. इस फिक्रे में हम काइंड्स की बात नहीं कर रहे हैं. काइंड्स की बात नहीं कर रहे, इसलिए इसमें फिश होगा. ओके. और जो आप पूछ रहे हैं शायद अपॉस्ट्रोफी डाल के पूछ रहे हैं. नहीं, फिशेस. अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी इसके ऊपर. कैन यू काइंडली मेक अ सेंटेंस ऑफ फिशेस? यस, व्हाई नॉट? फॉर काइंड्स आई एम आस्किंग. यस, फॉर देम यू कैन राइट फिशेस व्हेन फिश विल बी यूज्ड एज फिशेस. बता रहा हूं जायदा, जब हम डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस. फॉर एग्जांपल ये बना ही दिया है नुमान ने, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन द इंडियन ओशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी all the kinds of fishes cannot survive in salt waters. In saltish कर ले, in saltish waters. यहां fishes आएगा क्योंकि I'm talking about different kinds of fish. Got the idea? ज़्यादा clear? जी लगाइए, साफ कर.
सॉरी बेटा, ये 2-1 मरतबा आना पड़ेगा, ठीक है? ये आज मैं करेक्शंस पढ़ा रहा हूं। अच्छा, थैंक यू। अब देखिए, दिस बॉय डज मैनी mischiefs, is it correct? जी यहां वाटर भी इसी तरह वाटर्स होएगा, ठीक है? हो सकता है फर्क से, क्योंकि हम काइंड्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। ब्रैकिश वाटर होता है जी। इस फिक्रे को करेक्ट करें। अगर ये इनकरेक्ट है, दिस सॉरी दिस बॉय, चलिए दिस ही रहने दें, दिस बॉय डज मैनी मिसचीफ्स। मिसचीफ एस कट कर दूं? नहीं अफसा, अब आपने ओवर जनरलाइज किया है रूल को। डज मैनी अ मिसचीफ, अ लॉट ऑफ मिसचीफ, मिसचीफ्स, मैनी अ मिसचीफ्स। अच्छा, मैं अभी इसे करेक्ट नहीं कर रहा, मैं एक और फिक्रा लिख रहा हूं, अब आप करेक्ट करेंगे। माय फादर gave me many advices. क्या करूं इसमें? कट कर दूं मैनी को उस्मान असलम, लॉट्स ऑफ एडवाइसेस। इसका मतलब अभी भी आपके लिए मुश्किल है। ये फिक्रा देखिए, he knows many skills, he knows many skills। वेल डन। नमान ने ठीक दिया है, नमान, अनम ठीक दिया है, जाहिदा फरूक ठीक दिया है, इन 3 का ठीक है जी। अब देखिए, मैं आपको एक रूल बताने लगा हूं, ये करेक्ट कैसे होने हैं। दिस बॉय डज मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, एस कट जाएगा। सेकेंड में, माय फादर गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, एस कट जाएगा। ही नोज मैनी काइंड्स ऑफ स्किल, एस कट जाएगा। क्या मतलब है? नॉट पोजेसिव, नो नो मरियम इमरान, पोजेसिव नहीं। देखिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जैसे कि ये मिसचीफ, एडवाइस और स्किल, ये नाउन एक तो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कंक्रीट नाउन्स नहीं है, एंड सेकेंडली ये अनकाउंटेबल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट कंक्रीट, दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सेकेंडली, दे आर अनकाउंटेबल। इसलिए इनको प्लूरल बनाने के लिए या काउंटेबिलिटी देने के लिए हम फिर एक्स्ट्रा फ्रेजेस ऐड करते हैं। एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, पीसेस ऑफ एडवाइस, ही नोज मैनी काइंड्स ऑफ स्किल। हालांकि 99% लोग इस फिक्रे को ऐसे लिखते हैं, ही नोज मैनी स्किल्स, लेकिन दिस मैनी काइंड्स ऑफ स्किल, ठीक है? ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि जी आई हैव so far learned 3 poetries. I have so far learned 3 poetries. ये मैं दे रहा हूं आपसे एग्जाम्पल। अब देखिए, पोएट्रीज नहीं हो सकता, पोएट्री एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल है। इसलिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं करूं आई हैव सो फॉर लर्न 3 पोएम्स कर लें, 3 पोएम्स आ सकता है, पीसेस ऑफ पोएट्री नहीं आ सकता, ठीक है? या फिर सॉरी, पोएट्री नहीं आ सकता, या फिर आ सकता है 3 पीसेस ऑफ पोएट्री। पोएट्रीज कभी नहीं हो सकता, ठीक है? कभी नहीं हो सकता जी। कपलेट्स भी हो सकता है, कपलेट इज अ डिफरेंट थिंग। या जैसे मैं कहूं कि जी the sceneries of Kashmir are very charming। अब सीनरीज नहीं होता, इट इज ऑलवेज सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है? सीनरी प्लूरल नहीं होता। इसलिए रूल क्या है, कुछ नाउन्स जो एब्स्ट्रैक्ट हो या अनकाउंटेबल हो, उनको प्लूरलिटी देने के लिए हमें कोई फ्रेज ऐड करनी पड़ती है, पीसेस ऑफ पोएट्री, ठीक है?
एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, काइंड्स ऑफ स्किल, इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आई होगी। अब एक और फिक्रा गौर करें। आई गेव द बेगर a 10 rupees note. I gave the beggar a 10 rupees note. जी, करेगा कोई इसको? I gave the beggar, जी रुपी आना है, शाबाश, एस कट जाएगा। फिर वही चीज, I gave the beggar। अब हमने न्यूमरल जो यूज कर लिया 10, तो फिर आगे प्लूरल देने की रीजन नहीं है। ये तो वो मीरा वाली इंग्लिश होगी कि आपकी ब्रेसलेट बड़ी खूबसूरत है। हाँ, मेरे शौहर्स दुबई से लेके आए थे, शौहर्स, ठीक है। तो बहरहाल उसके केस में ठीक भी है। 2-3 बंदे अदालतों में केस करके बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कोई कहता है ये मेरी बीवी है, कोई कहता है मेरी बीवी है। वेल, मीनवाइल मैं एक टास्क दे दूं आपको कल के लिए। आपको पता है ना, मैंने कहा था कि मैं आपको एक थोड़ी सी मुश्किल प्रेसी दे रहा हूं। आपने इसको इफेक्टिवली करना होगा, इस प्रेसी को। ठीक हो गया? थोड़ा सा इफेक्टिव तरीके से। अच्छा, ये एक प्रेसी इनको सेंड करनी है, अच्छी सी पिक्चर सेंड कर दें, या नीचे उनके कंप्यूटर में भी पड़ी है, आप यहीं से कर दें। नेक्स्ट, अगला सेंटेंस में आ रहा हूं। अब देखिए, अगला सेंटेंस जो है, आपको रूल आता हो या ना आता हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से, अपनी माइंडसेट से भी आप इसको ठीक कर सकते हैं। आई बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोज, या 2 डजन ऑफ मैंगोज, 2 डजन ऑफ मैंगोज, एस कट जाएगा। ठीक है, गौर कीजिए इस फिक्रे पे। द ज्यूरी वर यूनानिमस in their verdict. The jury were unanimous in their verdict. Was in its right. मैं अभी नहीं बताता ये आप ठीक कह रहे हैं, गलत एक फिक्रा और ऐसा ही लिख रहा हूं। The jury was divided in its verdict. How about this sentence? Were divided. Were divided. Well done. Well done, Numan. Well done. जी अहमद शाह, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, यहां ज्यूरी जो है यूनानिमस है अपने डिसीजन में, कंप्लीट ज्यूरी एग्रीड है। तो यहां ज्यूरी एज ए ग्रुप नाउन लिया जाएगा, कलेक्टिव नाउन। तो हम इसके लिए वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। अब यहां पे ज्यूरी हमारी डिवाइड हो गई है, 3 जजेस एक तरफ हो गए हैं, फॉर एग्जांपल 2 एक तरफ हो गए। तो यहां आएगा द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर वर्डिक्ट। यहां ये आना, गॉट द आइडिया? यहां वर आना है और देयर आना है, वहां वाज आना है और इट्स आना है। समझ आइए आपको? नेक्स्ट सेंटेंस, your trousers are loose. How about this sentence? Your trousers are loose. एस कट कर दूं, उस्मान मेरा वाली इंग्लिश है। is loose, is pair of trousers. अच्छा, मैं अभी करेक्ट नहीं करता, मैं कहता हूं माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड। माई स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड। हाउ अबाउट दिस सेंटेंस? इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? Is old. How about this sentence? Her scissors are dull. Her scissors are dull. मुस्तफा इमरान कहते हैं ये करेक्ट है। पेयर ऑफ scissors करेक्ट है, ये भी ज़ायदा फरूक कह रही हैं।
अब देखिए ये तीनों फिक्रे करेक्ट है, इनमें कोई चेंज नहीं आनी। जितने हमारे इनसेपरेबल पेयर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ना, जो इनसेपरेबल होते हैं पेयर ऑफ आर्टिकल्स, जैसे स्पेक्टिकल्स हैं इनसेपरेबल है ना, ट्राउजर्स इनसेपरेबल है, सीजर्स इनसेपरेबल है। कैंची का एक ब्लेड तो कुछ नहीं काट सकता ना। कभी किसी को आपने एक पैंट का पांचा पहन के बाहर आते तो नहीं देखा होगा ना, दोनों ही पहन के आते हैं ना लेग्स, ठीक है। जितने इनसेपरेबल पेयर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ये प्लूरल लिए जाते हैं, इसलिए इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करना होता है। लेकिन एक चीज आ सकती है जो पहले किसी ने दी है, आगा साहब ने भी दी है, आगा साहब लेकिन गलत कर गए आप फिर भी। अगर हम इनको पेयर के तौर पे लिख लें, योर पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज लूज, अब इज आ सकता है क्योंकि अब हम वर्ब अपना ट्राउजर्स के लिए नहीं दे रहे बल्कि पेयर के लिए दे रहे हैं। इसी तरह my pair of spectacles is old, her pair of scissors is dull, फिर आ सकता है, ठीक है। वेल सारा, मेरी तो सारी अंग्रेजी फेल हो गई है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस पर, लेकिन सारा इससे सारी अंग्रेजी ठीक भी हो जानी है आपकी, यही तो बताना चाहता हूं। इतनी गलत उलाम है इसमें, खुदा ना खास्ता अगर हम वाकई ग्रामर के कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक आपका काम चेक करें ना, तो लहू लहू करके आपकी असाइनमेंट्स आपके हाथ में वापस पकड़ाएंगे और आपको खुदकशी करने के लिए जगह ढूंढेंगे आप लोग कि कहां से छलांग लगाएं हम। ऐसे होता है, लेकिन सारा इसको पॉजिटिवली लेना है, इसी से तो माशाल्लाह आपकी इंग्लिश ठीक होगी। ये सही पेंडोरा बॉक्स है, कैसी खूबसूरत चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेंगी। आई वॉज कंफ्यूज्ड दैट आई एम नॉट एबल टू स्पॉट अ मिस्टेक इन दीज sentences till sir told these are correct. Yes. How do we assume it's a pair? मोहम्मद अहमद, चाइल्डिश क्वेश्चन, ये पेयर ही होता है ना, इनसेपरेबल आर्टिकल पेयर होते हैं। दो आंखें हैं, दो शीशे हैं, दो टांगे हैं, दो पांचे हैं, दो लेग्स है ना, कैंची के दो फल हैं, तो ये पेयर के तौर पे ही लिए जाते हैं ना, इसलिए पेयर यूज कर लेंगे तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अगर ट्राउजर्स या स्पेक्टिकल्स यूज करेंगे तो फिर वो प्लूरल होगा। गॉट द आइडिया? नेक्स्ट, आई वाज कंफ्यूज, ओके वेल मेरी तो सारी अंग्रेजी अच्छा फेल हो गई है। सोफी नवाज भी कह रही कुड बी मोर देन टू पेयर ऑफ ग्लव्स। पेयर ऑफ ग्लव्स तो होते ही सेपरेबल है ना, वो तो होते ही सेपरेबल है। मैं इनसेपरेबल की बात कर रहा हूं नमान, वो सारे के सारे प्लूरल लिए जाते हैं। It is unfortunate to realize these intricacies so late in our academic career. Yes, but you are not at fault, आगा फरहान। उसकी वजह यह है कि आप का इंग्लिश से पिछले कुछ 6-7 साल से वास्ता नहीं है डायरेक्टली, आप अपनी अपनी प्रोफेशनल रिस्पेक्टिव लाइंस में चले गए। गॉट द आइडिया? तो आपने इंग्लिश पढ़ी ही नहीं, तो यू आर नॉट एट फॉल्ट। राइट नो भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है। पेयर ऑफ सॉक्स, जी सॉक्स ही आएगा यहां पे, सॉक नहीं आएगा, सॉक्स, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ? आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी ऐसी इंट्रिकेसीज का पता चलेगा जिसमें ये चीजें आप हैरान होंगे कि व्हाट इज ऑल दिस, राइट। छोटी छोटी मिस्टेक भी होती हैं। अच्छा जी, सॉरी आपने वो कर दिया, ये मुझे दे दे, चला भी गया उनको। जस्ट टेल मी, हैव यू गॉट अ प्रेसी पैसेज? आपको एक पैसेज सेंड किया गया है, प्रेसी का पैसेज है, have you got that? Received, that's very fine. If you have received that, let me make it clear to you as well. It has just been taken from the paper 2007. किसी को अगर ना मिला हो या मुश्किल लगे तो पेपर 2007 की प्रेसी है ये, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, पेपर 2007, ठीक है। मैंने कुछ नहीं बताना इसके बारे में, सारे का सारा आपने इसको पढ़ना है प्रॉपरली, आपके छोले बिक जाएंगे। इसको 2 से 3 रीडिंग्स दीजिएगा, फिर आप प्रेसी कीजिएगा, फिर ठीक होगी, ठीक है जनाब। ऐसे ही चेक होते हैं करेक्शंस में, यही तो चेक करना है महक, यही तो चेक करना है, सारे क्लोजली ऐसे ही चेक होंगे महक। गॉट द आइडिया? वेल, ये आपकी प्रेसी है, कल के लिए आपने ये प्रेसी करके लानी है और आपके लिए कोई काम नहीं है, ये प्रेसी कर लेंगे तो बड़ी मेहरबानी। कल हमारी बात यहीं से जारी रहेगी करेक्शन से।
मैंने आपको शुरू में ओरिएंटेशन क्लास में बताया था कि इफ यू आर एबल टू करेक्ट द सेंटेंसेस तो समझ लें 75% इंग्लिश आपको आ गई, ठीक है, और आपको आ जाएगी इंशाल्लाह ताला अगर आप इनको आहिस्ता आहिस्ता करेक्शंस को लर्न कर लेंगे। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट देम पॉजिटिवली। गॉट द आइडिया? सेइंग दैट शी शेयर्ड माय प्रेसी फॉरहैंड writing with you by the name Sayyid Ahmed Sifat। अच्छा, सैयद अहमद सिफात के नाम से आपने की, आपने वो वाली प्रेसी की थी, वही वो टू बायोलॉजिकल एडवांटेजेस वाली अहमद शाह? कल क्लास नहीं है सारा, कल छुट्टी है, सोए जी। कल लेक्चर है सर? नो, कल से मुराद मेरा नेक्स्ट वर्किंग डे होता है। दे आर यूज्ड टू चेकिंग द पेपर्स फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। यस, व्हाई नॉट? जी अहमद शाह, वो मैंने चेक कर दी है, आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन बहुत बुरी नहीं है अहमद शाह, लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं उसको पढ़ लिया है मैंने। एग्जामिनर इस किस्म के हैंडराइटिंग को पढ़ लेगा, आपको इतना ज्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट